Good morning, students. Class 7, Chapter 4, Exercise 4.1. The chapter is rational numbers, and we have to done exercise 4.1, question number 1, 2, 3, and 4 and 5. Now we have to start question number 6. We have to revise what is rational number. Rational number which are written in the form of P upon Q with the condition P and Q both are integers and Q not equal to 0. Clear? Now question number 6. Which of the two given rational numbers is greater? आपको पास टोटल क्वेश्चन नंबर 6 में 8 पार्ट हैं. हर एक पार्ट में आपको दो दो रेशनल नंबर गिवन है, तो आपको कंसीडर करना है कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है. वी हैव टू नोट डाउन 5th पार्ट, 8th पार्ट एंड 7th पार्ट. रिमेनिंग पार्ट डू योर होमवर्क, डू योर सेल्फ. सेकेंड पार्ट -6/11 minus के 2/13. वर्किंग क्रॉस मल्टीप्लाई -6 multiply 13 -2 multiply 11 -78 -22. We know that -78 and -22 whose value is greater? Obviously -22 is greater, so -2/13 is greater then -6/11. 8 part 2/5 -8/13. First you have to remember that in a rational number denominator never can be negative, so we remove the negative sign from denominator, so minus cancel in numerator and denominator both. The question is 2/5 and 8/13. Again cross multiply 26 and 40. Obviously 40 is greater than 26, so -8/13 is greater. 7th part -16/-7 -2/11. Again remember minus sign never can be numerator, so minus goes to numerator. -16/7 -12/11 cross multiply -176 -84. Obviously -84 is greater, so -12/11 is greater fraction than 16/-7. Remaining part do your homework. I hope you understood. Note down it. Okay students, now we have to do question number 7. Arrange in ascending order. Do you know very well ascending order mean smaller to greater? There are three fractions -3/7, 5/-4, 11/-14. Remember again denominator never can be negative, so -3/7 -5/4 -11/14. Now the working. Firstly find out LCM of 7, 4 and 14, and then remember show your working rough work in the right side in a box. Find out LCM of 7, 4 and 14. LCM is 28. Now write 28. 28 को 7 से डिवाइड करेंगे. 4 -3 की 4 से मल्टीप्लाई. 28 को 4 से डिवाइड किया. 7 -5 की 7 से मल्टीप्लाई. 28 को 14 से डिवाइड करेंगे. 2 -11 की 2 से मल्टीप्लाई. इट्स मीन -12 -35 -22 अपॉन 28. सो असेंडिंग ऑर्डर -35 सबसे पहले आएगा बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट इन नेगेटिव. -22 -12. सो द रिक्वायर्ड आंसर दिस रिप्रेजेंट दिस, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो रिक्वायर्ड आंसर आपका ये हो गया कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 8 राइट टू डिसेंडिंग ऑर्डर. प्रोसीजर इज सेम, बस इन डिसेंडिंग ऑर्डर हायर टू स्लोअर, मतलब लार्जर टू स्मॉलर आप ट्रेवल करोगे. सबसे पहले से बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. क्वेश्चन नंबर 9 represent -4/5 on the number line. In the question number 9 there are 5th part
जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम फिलहाल माइनस का 4/5 लेके चल रहे हैं। वी ड्रॉ नंबर लाइन। अगर हम माइनस का साइन इग्नोर कर दें तो 4/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। सो द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड -1 बिकॉज इज नेगेटिव, तो नंबर लाई इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो बिटवीन 0 एंड -1. So magnify it and divide it into 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5. First dot, क्योंकि in the negative we write 0 to left. -1/5, -2/5, -3/5. So it is -4/5. इस तरह से हमने -4/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। आई होप यू अंडरस्टूड। नोट डाउन इट। Now student, question number 10. In the question number 10, compare the following pairs using greater than, less than or is equal to sign. Question number 10 is same as a question number 6. So question number 10, do yourself. Question number 11. It's an important question. Find 4 rational numbers between each of the following. यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 parts are given. In the each part we have to find out 4 rational numbers. We have note down second part, -2/3, -11/6. We observe that in the both rational number denominator is different. So in the first step we same denominator. To find out LCM of 3 and 6, which is 6. Its denominator is already 6. To convert its denominator into 6, multiply by 2 in numerator and denominator both. So -4/6 and -11/6. So 4 rational number between -4/6 and -11/6. Obviously -5/6, -6/6, -10/6, -8/6, -9/6 is also possible, but we have to write only 4 rational numbers. So it's our answer. Seventh part, 0 and 1. 0 and 1, both denominator may be 1, but there may be 0 and 1 between neither number lies. So we multiply numerator and denominator both by 5. Remember, if we have to find out 4 rational number, then we multiply numerator and denominator by 1 extra. It's mean by 5. 0/5, 5/5. So answer is 4 rational number between 0/5 and 5/5, 1/5, 2/5, 3/5 and 4/5. If we have to find out 5 rational number, then multiply by 6. Clear? Now question number 12. Identify the position of the point P shown on the number line. In the number line we have to represent a small part of the number line. 4 and 5, P यहाँ पर represent है. We observe that the portion of 4 and 5 divided into 3 parts. So P represent 4 stood 1, 2, 3. 4 stood 1/3. यानी कि 3 में से एक हिस्सा P के पास है और 4 तो ऑलरेडी आप लिखोगे ही. तो आंसर इज 13/3. I hope you understood. So exercise 4.1 is complete. In the next video we start exercise 4.2. Thank you very much.